का कार्यक्रम है। तो हम जानते हैं कि आज जामनगर में एक और खुशनुमा पहलू जुड़ने जा रहा है जामनगर के लिए। हम जानते हैं कि जामनगर कई नाम से जाना जाता है, जिसमें कि चाहे वो तेल की नगरी हो, पीतल नगरी हो, छोटा काशी हो, इस तरीके के काठियावाड़ का रत्न हो। इस सब में एक बड़ा नाम और जुड़ने जा रहा है, जो कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ का जो पारस्परिक चिकित्सा का जो वैश्विक केंद्र है, उसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो डीजी हैं, उन सबकी मौजूदगी में आज ये जो आधारशिला रखी जाएगी, ये बेहद शानदार पक्ष होगा, खास तौर से भारत के लिए, जबकि वैश्विक केंद्र के रूप में जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसका एक नया आगाज भारत करने वाला है। क्योंकि इस वैश्विक केंद्र में ये WHO का एक एक्सटेंडेड ऑफिस भी होगा, जो कि यहाँ पर काम करेगा भारत में। और इसमें WHO ये कोशिश करेगा कि पूरी दुनिया के जितनी भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उन सबका यहाँ पर एक समावेशी यहाँ पर उनका अध्ययन हो, और उसमें जो रिसर्च के माध्यम से जो चीजें सामने आए और जो पृथ्वी और जन समुदाय और उनके स्वास्थ्य कल्याण के लिए प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान उनका जो उत्प्रेरक केंद्र के रूप में यह वैश्विक केंद्र स्थापित हो। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है आज जामनगर में, और ये आज हम देखने जा रहे हैं। और शाम तक का ये कार्यक्रम है लालचंद, बाद में वापसी संभवतः आज ही है, शाम में है, और अहमदाबाद के लिए वापसी है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि जो भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है वो न सिर्फ पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करे, बल्कि अपने ज्ञान को तो दुनिया को दे ही, दूसरों का जो ज्ञान है उन सबका एक समावेशी सम्मिश्रण के जरिए ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जो मिलजुल कर हम प्रयास करने वाले हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है, खास तौर से स्वास्थ्य के जगत में। और खास तौर से इसमें अगर हम देखें लालचंद, जो हमने देखा था कि जो भारत के जो किसान हैं उनको भी इससे एक बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि जो मेडिसिनल प्लांट है उनकी भी खेती के जरिए किसानों को जो सीधा लाभ मिलेगा, वो एक बड़ा पक्ष है, वो बड़ा पहलू है। इन सब चीजों को हम यहाँ रेखांकित कर सकते हैं कि भारत एक नई जो व्यवस्था है पूरी दुनिया में जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की, उसमें एक नई आधारशिला रखने जा रहा है। खास तौर से जामनगर, जो कि पहले से ही आयुर्वेद का विश्वविद्यालय यहाँ पर था, लोग कह रहे थे कि जामनगर को क्यों चुना गया। हम जानते हैं कि जामनगर पहले से ही पारंपरिक चिकित्सा के मामले में एक विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर तमाम छात्र अध्ययन करते हैं, और यहाँ एक ऐसी प्रणाली विकसित की गई थी जिसमें कि जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलता रहे, और कम से कम भारत की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो जीवंत रहें और वो जनमानस के लिए लाभान्वित होती रहें। लालचंद, आप देख रहे होंगे दृश्यों के माध्यम से जो कलाकार हैं वो यहाँ पर इस समय इंतजार कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट से बाहर जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री बाहर निकलेंगे, तब उनका जो स्वागत सत्कार करने के लिए गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, और खास तौर से जो गुजरात का जो गरबा है वो यहाँ की एक नई पहचान है। उस पहचान को यहाँ पर वो प्रदर्शित करते हैं, खास तौर से ऐसे किसी भी समारोह में, जबकि देश विदेश के जो लोग हैं भारत से जब गुजरात के लिए भ्रमण के लिए आते हैं, ऐसी परिस्थितियों में गुजरात एक अपने कला का जो प्रदर्शन है उसको जरूर करता है। जी लालचंद, बिल्कुल। मैं ऋषि आपसे ये भी समझना चाहूँगा कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो शिलान्यास समारोह है उसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहेंगे। मॉरिशस का इस सेंटर से किस तरह से जुड़ा होगा, क्या भागीदारी रहेगी, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए लालचंद, इसमें तो स्वतंत्रता પછી ત્યારે એના માટે ફંડનો પ્રશ્ન હતો કે કેવી રીતે ફંડ ઊભું થશે. સરદાર પટેલ અને કમા મુનશી ને બધા એના માટેના પ્રયત્ન કરી રહ્યા હતા કે હવે આખું એક નવેસરથી આને કરીએ. ત્યારે એ જે સમિતિ હતી એમાં જામ સાહેબ પોતે પણ હતા અને બીજા અગ્રણીઓ હતા દેશના. એ
આથી 50-60-70 વર્ષ પહેલા 70-75 વર્ષ પહેલા જામ સાહેબે સોમનાથ મંદિર માટે 1 લાખ રૂપિયા આપવાની જાહેરાત કરી તેને આપ્યા હતા. એટલે કહેવાનો આશય એ છે કે એ તો બધા જાણે पद्धति है उसका एक यहाँ पर भागीदारी रहेगी, उनका जो अध्ययन है, उनका जो रिसर्च है उसका यहाँ पर भागीदारी रहेगी. और भारत पड़ोसी मुल्क के नाते और मॉरिशस के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं, जो पुराने संबंध हैं, आज के संबंध नहीं है मॉरिशस के साथ लाजन, ये बहुत ऐसे संबंध हैं, पुराने संबंध हैं जिसमें कि जो राजनयिक संबंधों के माध्यम से अगर हम देखें तो भारत और मॉरिशस के बीच 1948 में इनको पूरी तरीके से स्थापित किया गया था. और इसमें अगर हम बात करें तो ये जो संबंध है इसमें एक दोनों देशों के बीच में चाहे वो आर्थिक रूप से हो या सामरिक रूप से हो, एक आपसी सहयोग और तालमेल है दोनों मुल्कों के बीच में. इस मायनों को लेकर कि जो दक्षिण एशियाई जो शांति है उस शांति बहाली में मॉरिशस हमेशा भारत के साथ रहा है और भारत भी इस पूरे पहल में मॉरिशस के साथ खड़ा देखा गया है. जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए ऋषि, मैं लौटता हूं आपके पास. और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में जामनगर स्थित WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का आधारशिला रखेंगे. इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद रहेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री 20 अप्रैल આપણે ચર્ચા અલ્કેશભાઈ આગળ ચાલુ રાખીશું. અત્યારે સમય થયો છે વધુ એક બ્રેકનો. દર્શક મિત્રો મળીએ એક નાનકડા બ્રેક બાદ. અમુક કિસ્સા સંઘર્ષના તો અમુક વાત સફળતાઓની, વણ કહ્યા વારસાની, આશાઓ નવા ભારતની. મહિનાના આખરી રવિવારની રહે છે પ્રતીક્ષા. મલયાચલના પાલવથી વિંધ્યાચલના આંગણ સુધી, બ્રહ્મપુત્રાના ઘાટથી હિમાલયના વ્યાપ સુધી થાય છે મનની વાત પ્રધાનમંત્રીની સાથે. તો સાંભળો આ મહિને 24 એપ્રિલ સવારે 11 વાગે મનની વાત. આકાશવાણી અને દૂરદર્શનની બધી ચેનલ્સ પર મનની વાતના પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં અનુવાદનું પુનઃ પ્રસારણ આપ સાંભળી શકો છો રાત્રે 8 વાગે આકાશવાણી અને દૂરદર્શનની બધી પ્રાદેશિક ચેનલો પર. તો યાદ રાખો, રવિવાર 24 એપ્રિલ સવારે 11 વાગે મનની વાત. પોપટ જાણીને પ્રીત કરી હતી ભલા માણા, અને તું તો હુડલો નીકળો. प्रधानमंत्री 20 अप्रैल को गांधीनगर में महात्मा मंदिर में होने वाले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का भी उद्घाटन करेंगे. इस सम्मेलन में मॉरिशस के प्रधानमंत्री और WHO के महानिदेशक भी मौजूद रहेंगे. इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में करीब 90 प्रख्यात वक्ताओं और 100 प्रदर्शकों की उपस्थिति के साथ 5 पूर्ण सत्र, 8 गोलमेज सम्मेलन, 6 कार्यशालाएं और 2 संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा. शिखर सम्मेलन आयुष क्षेत्र में निवेश क्षमता को उजागर करने में मदद करेगा और इनोवेशन, अनुसंधान और विकास, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा. ये सम्मेलन उद्योग जगत के प्रमुखों, शिक्षाविदों और विद्वानों को एक साथ लाने में मदद करेगा और भविष्य के सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा. गांधीनगर से मेघना देव और जामनगर से नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज. तो अब से कुछ ही देर में इस केंद्र का उद्घाटन होगा और यहीं पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, साथ में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख भी पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे. तो हम लगातार आपको उससे जुड़ी हुई खबरें दिखाते रहेंगे. और विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कि जामनगर में ग्लोबल सेंटर उत्कृष्टता का केंद्र होगा जो साक्ष्यों और अनुसंधान के उपयोग को बढ़ावा देगा. जामनगर में बनने वाले केंद्र के माध्यम से ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न साइंस से जोड़ने में मदद मिलेगी. ये सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेफ और इफेक्टिव होने का एविडेंस और डेटा उपलब्ध कराएगा. इससे ट्रेडिशनल मेडिसिन को नेशनल हेल्थ सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा, जिससे कि हर उम्र के लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन का पूरा फायदा उठा सकेंगे.
और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, जिसका मकसद उच्च गुणवत्ता वाली आयुर्वेद चिकित्सा को दुनिया भर के लोगों के लिए सर्वसुलभ बनाना है। यहां आधुनिक तकनीक की मदद से आयुर्वेद पर बहुविषयक शोध किए जाते हैं। और WHO के महानिदेशक आज गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के उद्घाटन में शामिल होंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के अपने दौरे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि जामनगर में स्थापित होने वाला ये अपनी तरह का पहला केंद्र है जो पूरी दुनिया को पारंपरिक चिकित्सा में निवेश करने में मदद करेगा। I have been really exposed to the, potential that India has in traditional medicine from early childhood, and it's one of the most diverse actually globally in terms of the potential India has, and I'm very, very glad that our global center will be in India. This is the first of its kind, and it's the only one. A global center that will help the whole world to invest in traditional medicine. तो ये जो ग्लोबल सेंटर WHO का है, इसका उद्घाटन कुछ देर में होने वाला है और हम आपको वहां जरूर ले चलेंगे, उससे जुड़ी हुई खबरें दिखाएंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और उन्होंने बनासकांठा में बनास डेयरी के एक नए कॉम्प्लेक्स और आलू प्रोसेसिंग प्लांट देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी पिछले कई वर्षों से स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र बन गई है। उन्होंने बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने और आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। पीएम मोदी ने शहद उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के लिए बनास डेयरी की सराहना भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात की यात्रा के दूसरे दिन दुग्ध उत्पाद के क्षेत्र में बड़ी सौगात प्रदान करते हुए बनासकांठा जिले के दियोदर में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए एक नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। नया डेयरी परिसर एक हरित क्षेत्र परियोजना है। ये संयंत्र प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण में सक्षम होगा। लगभग 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट का उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। आज यहाँ जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं, वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। आलू प्रसंस्करण संयंत्र में विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत आलू उत्पादों जैसे फ्रेंच फ्राइज, आलू चिप्स, आलू टिक्की, पैटीज आदि का उत्पादन करेगा, जिन्हें कई अन्य देशों को निर्यात किया जाएगा। ये संयंत्र स्थानीय किसानों को सशक्त बनाएंगे और क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरेज गाय, मैसानी भैंस और यहाँ के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं।
बनास डेयरी तो किसानों को आलू का उत्तम बीज भी उपलब्ध कराती है और आलू के बेहतर दाम भी देती है। और ये सिर्फ आलू तक सीमित नहीं है। मैंने लगातार स्वीट रिवॉल्यूशन की बात की है। शहद से किसानों को अतिरिक्त आय से जोड़ने का आह्वान किया है। इसको भी बनास डेयरी ने पूरी गंभीरता से अपनाया है। पीएम मोदी ने पालनपुर में बनास डेयरी संयंत्र में पनीर उत्पादों और मट्ठा पाउडर के उत्पादन के लिए विस्तारित सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही गुजरात के दामा में स्थापित जैविक खाद और बायोगैस संयंत्र भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। पीएम मोदी ने खिमाना, रतनपुरा, भिलुडी, राघनपुर और थावर में स्थापित होने वाले 100 टन क्षमता के 4 गोबर गैस संयंत्रों की आधारशिला भी रखी। बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया गया है और 4 गोबर गैस प्लांट का शिलान्यास हुआ है। ऐसे अनेक प्लांट्स बनास डेयरी देश भर में लगाने जा रही है। ये कचरे से कंचन के सरकार के अभियान को मदद करने वाले हैं। एक तो इससे गांवों में स्वच्छता को बल मिल रहा है, दूसरा इससे पशुपालकों को गोबर का भी पैसा मिल रहा है, तीसरा गोबर से बायो सीएनजी और बिजली जैसे उत्पाद तैयार हो रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो जैविक खाद मिलता है उससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी और हमारी धरती मां को बचाने में भी हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया। उन्होंने संयंत्र में मौजूद विशेषज्ञों से डेयरी और आलू प्रसंस्करण के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पीएम के गुजरात दौरे से जुड़ी हुई और बाकी अन्य खबरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। What does this recognition mean to you? It was a complete bolt from the blue. You know, Booker, I've heard of the Booker, but Booker is somewhere there. You know, I'd never really brought it into my world. Ved Samadhi has found another home. Because of Daisy's crafting of it, it has actually found a place of belonging in this new home. છ આઠ મહિના પહેલેથી લગભગ એના તૈયારીઓ જુદી જુદી રીતે શરૂ થતી હોય છે. એટલે મારે જો વ્યક્તિગત રીતે આ જોવાનું હોય તો મને તો એ જ લાગે કે ભાઈ આ એ જ દિશાનું કામ છે કે જે કંઈ બાકી રહે છે, જ્યાં જ્યાં જે ક્ષેત્રને અસર કરવાની છે, જે ક્ષેત્રને ટચ કરવાની જરૂર છે કે ભાઈ અહીંયા આટલું કરીશું તો આ એક જરૂરી છે, તો એવા કામોને હાથ પર લેવાની આ એક હોય એવું હું કહું ખરો, ચોક્કસ કહું રાજકીય પેલા સમીક્ષક તરીકે. અને એ જ કારણે ભૌગોલિક અને તમે જેમ કહ્યા એમ 4 અલગ અલગ ક્ષેત્ર, એ બંને વસ્તુને જોઈ શકાય કે એક શિક્ષણને આવરી લીધું. શિક્ષણ વિશે છેલ્લા થોડા વખતથી અલગ અલગ સ્તરે અલગ અલગ ક્યાંક જુદી જુદી વાતો થઈ રહી છે, એના વિશે રાજકીય કુસ્તી પણ ચાલુ છે પક્ષો વચ્ચે.
અને ખેડૂતોનો પણ પ્રશ્ન હજુ તો જે પેલું આંદોલન હતું એ પૂરું થયા પછી પણ કંઈક ને કંઈક એના રહ્યા કરે છે, તો એમને પણ એક સંતોષ થાય, એમને પણ એક કામગીરી થઈ છે દેખાય એમના દિશામાં. આદિવાસીઓનો મુદ્દો પણ આપણે જાણીએ છીએ કે છેલ્લા થોડા વખતથી ક્યાંક ને ક્યાંક અલગ અલગ રીતે નાના મુદ્દાને લઈને એ લોકો સામે આવે છે, તો એને પણ ટચ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. અને હેલ્થ કેર તો સાર્વત્રિક છે, એમાં કંઈ બહુ ઇસ્યુ નથી, કારણ કે એ તો એમનો જે કહેવાય વડાપ્રધાનનો અને એ એમનો મુખ્ય મુદ્દો છે. તમે એમની જે યોજનાઓ છે આરોગ્યની લગતી એનામાં બધાને આવરી લે છે, અને આમાં એક આધુનિકરણ થઈ રહ્યું છે, ભારતની પરંપરાગત પદ્ધતિને એમાં સામેલ થઈ રહ્યા છે. પણ બાકીના જે 3 મુદ્દા છે, સામાજિક ન્યાય વાતો, ખેડૂતોનો મુદ્દો અને શિક્ષણ, તો આ મુલાકાતમાં સળંગ 3 દિવસની મુલાકાતમાં આ વિષયોને સ્પર્શવા, એ વિષયે આગળ કામગીરી કરવી, એનામાં આધુનિકરણને એમાં વધારે વ્યાપક સમાજને સુધી પહોંચવાનો જે દિશા છે એ બિલકુલ રાજકીય છે. અને એમાં મને લાગે છે કે સરકાર તરીકે પણ એ જરૂરી છે કે ભાઈ આ કામ કરવા જેવા છે. એવું નથી કે પક્ષ તરીકે કે આપણે નથી એને ગણતા, પણ સરકાર તરીકે આ કામગીરી જ્યારે થઈ રહી છે ત્યારે સમાજ માટે જ છે. એટલે નો ડાઉટ ચૂંટણી વખતે એના લેખાજોખા થશે, પ્રજા એના વિશે જોશે કે ભાઈ શું થયું છે. ઘણી વાર એવું બને કે નેતાઓ વચન આપે, એના કહેવામાં આવે પણ ન થાય. ઘણા વર્ષો સુધી આપણે ત્યાં એવું બન્યું છે કે ભાઈ એ શક્ય જ ન બને, જે કહેવા છતાંય થતું જ ન હોય, તો એના કારણે પ્રજા નારાજ પણ થાય. એવું નથી હોતું કે દરેક યોજનાથી કે દરેક કામગીરીથી બધા એને સારું જ થઈ જાય, પણ એ દિશાના પગલાં છે સરકારના, એ દિશાના કામગીરી છે, અને 100% એ રાજકીય એનો ટોન જે છે એ રહેવાનો છે, એમાં કોઈ બેમત નથી. જી બિલકુલ. અને એમ પણ સરકારની એક ખાસિયત નરેન્દ્ર મોદી સરકારની રહી જ છે કે જે પ્રકલ્પો જ્યારે શરૂ કરે છે એની એક સમયસીમા બાંધી લે છે, અને સમયસીમામાં એને પૂર્ણ કરવાનો આગ્રહ હોય જ છે. એટલે એ રીતના પણ આ જે પ્રકલ્પો છે જે અત્યારે એના નિર્ધારિત સમયે એનો શિલાન્યાસ કે એનું લોકાર્પણ થઈ જાય એનો પણ એક આગ્રહ રહેશે. બિલકુલ. આ એક ટ્રેક હંમેશા આપણે જોવો પડશે, ખાસ કરીને છેલ્લા 7-8 વર્ષથી, કે જેની જાહેરાત કરવામાં આવે, જેનો શિલાન્યાસ કરવામાં આવે કે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવે, એનો કામગીરી એ પૂર્ણ થાય છે ને એનો ઉદ્ઘાટન પણ એ કરે છે, એ પોતે કરે છે અથવા તો મિનિસ્ટર્સ કરે છે. એટલે આને આપણે ખરેખર પોઝિટિવલી લેવું જોઈએ કે આ થાય છે જ કામ. કોઈ વસ્તુ કદાચ એવી બની નથી અત્યાર સુધી, ખાસ કરીને છેલ્લા આટલા વર્ષોમાં, કે એની સીમા નિર્ધારિત ન થઈ હોય કામગીરી પૂર્ણ કરવાની, અને કામ ન થયું હોય, અને એ નહીં થવાને કારણે એમણે મીડિયાનો પેલો જે એક વોચ ડોગનો જે છે એનું સહન કરવું પડ્યું હોય કે ભાઈ આ કીધું તું પણ આ નથી થયું, જો આમ ભ્રષ્ટાચાર થઈ ગયો, કે આમાં આ કામ ન થયું, કે અહીંયા આ રીતે રોડા થયા. એવા મોટાભાગના એવા છે. બુલેટ ટ્રેનનો જે યોજના છે એમાં પણ આમ ક્યાંક અથવા તો બીજા રાજ્યના કારણે અસર થાય છે, પણ ગુજરાતમાં તો તમે જુઓ કે એનું કામ બહુ સરસ રીતે કામગીરી ચાલી રહી છે. એટલે મને લાગે છે કે તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે કે જેનું ખાતમુહૂર્ત કે જેની શિલાન્યાસ થાય એની કામગીરી પણ પૂર્ણ થાય છે, અને એને લોકાર્પણ કે એને જે કહેવાય એ એનું કરવામાં આવે જ છે. અને દાહોદની આપણે વાત કરીએ તો સ્માર્ટ સિટીઝને લગતી અનેક પરિયોજનાઓના શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણ પણ થવાના છે. હવે કોવિડના સમયનો પણ જો આપણે જોઈએ તો એ સમયગાળો પણ આને એના નિર્ધારિત સમયમાં પૂરું કરવામાં ક્યાંક એવો નડ્યો નથી કે જે એમણે નિર્ધારિત કર્યો હોય, થોડો સમય આગો પાછો થયો હોય, પણ અત્યારે એક પ્રકલ્પો પૂરા થયા છે ને એના લોકાર્પણ થઈ રહ્યા છે. એનું કારણ આપણે એને ટેકનોલોજી બેઝ જે
કામગીરી છે ને એને લઈ શકીએ કે તમારે જ્યાં ઓછામાં ઓછું હ્યુમન ઇન્ટરવેન્શન આવે એવા જે કામો છે એમને એમણે આગળ વધાર્યા છે અને કદાચ એ જ કારણે અટકતું નથી. બાકી સામાન્ય કામગીરી જ્યાં ભીડ થવાની શક્યતા હોય, જ્યાં એકબીજાને નજીક પેલાથી એના કારણે અસર થવાની શક્યતા હોય એવા કોઈ કામો નથી થયા. પણ ટેકનોલોજીનો જ્યાં જ્યાં ઉપયોગ થઈ શકે અને એના કારણે કામ આગળ વધી શકે એ કામો ચાલુ જ રહ્યા હતા અને કદાચ એ કારણે જ યોજનાઓ હજુ તો આની જે કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સ છે એ સાવ ગઈ નથી, તેમ છતાંય હવે એના ઉદ્ઘાટન થવા માંડ્યા, એની કામગીરી આગળ વધવા માંડી. તો મને લાગે છે કે એનું કારણ જે આપણે આજે સવારે જે ડેરીના ઉદ્ઘાટન, જે એના યુનિટનું ઉદ્ઘાટનને જે જોયું, એના જે બીજા સાથે એની સંલગ્ન પેલા જે જોયા, તો એમાં એક વાત આવી હતી કે કોરોના છતાંય કામ ચાલુ. WHO वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र या कहें ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसका शिलान्यास रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. इस अवसर पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद होंगे. साथ में होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री और इसके अलावा महानिदेशक होंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के. और इनकी गरिमामय उपस्थिति में आज ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसका शिलान्यास किया जाएगा. बेहद महत्वपूर्ण क्षण. और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी वहां पे आयोजन किया गया है. गुजरात के पारंपरिक नृत्य के जरिए जो तमाम मेहमान वहां पहुंच रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है. और एक तरह से माइलस्टोन या कहे एक मील का पत्थर है भारत की जो पारंपरिक औषधि जो प्रक्रिया है, जो औषधि की परंपरा है पारंपरिक. और WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन या कहें उसके हिंदी में वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना होने जा रही है. हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़े हुए हैं. ऋषि, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, गरबा के दृश्य हैं शायद, अगर मैं सही हूं तो निश्चित तौर पर जो भारतीय परंपरा है उसको तो यहाँ पेश किया ही जा रहा है. और आज जिस तरह से पारंपरिक औषधि का ये केंद्र बन रहा है वो भारतीय परंपरा का एक तरह से वैश्विक स्तर पे एक उस पे मुहर भी है. हाँ बिल्कुल ओमका, जिस तरीके से हम जानते हैं इस समय मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ एक तरीके से रोड शो कर रहे हैं. हम कह सकते हैं कि जो गुजरात और भारत के जो लोग हैं उनके आतिथ्य को स्वीकार कर रहे हैं. और जैसे कि आप दृश्यों के माध्यम से देख रहे हैं, इस समय आपने सही पहचाना, ये गरबा ही चल रहा है. और ये मुद्रा ग्रुप है जो कि जामनगर का है. और इस तरीके से हमने देखा कि तमाम जो जैसे आहिर कन्या छात्रावास की जो लड़कियां हैं उन्होंने पुष्प वृष्टि करके उनका स्वागत किया. साथ ही साथ योग ग्रुप है एक, उनकी तरफ से इस तरीके से तमाम सैकड़ों ग्रुप इस समय मैं कह सकता हूं कि सड़कों के किनारे खड़े होकर वो सांस्कृतिक, न सिर्फ सांस्कृतिक जो प्रस्तुति है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि भारत की संस्कृति और जो सभ्यता है उसका जो मिला जुला स्वरूप है, जिसमें कि हम देखते हैं कि गीत संगीत और जो भारत के जो रंग हैं उनको यहाँ पर इस समय प्रदर्शित किया जा रहा है. हम जानते हैं कि आज एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है, खास तौर से यहाँ पर जामनगर वासियों के लिए और भारत के लिए भी, क्योंकि पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि एक ग्लोबल सेंटर यानी कि जो वैश्विक केंद्र है जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का, उसकी आधारशिला रखी जा रही है. और पूरी दुनिया इस बात का गवाह बन रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम में प्रकाश हम जानते हैं कि तमाम जो दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे वो वर्चुअल रूप में या फिजिकल रूप में, जैसे कि हम जानते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री और WHO के जो दीदी हैं वो भी इस समय मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में. और आप देख रहे हैं ये दूसरे दृश्य हैं जो कि रास्ते पर जो करीब 1 किलोमीटर का ये जो मार्ग है, इस मार्ग पर जो अलग अलग जगहों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हैं वो चल रही हैं. और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है. कौन कौन गणमान्य लोग, कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री, इसके अलावा हम जानते हैं WHO के DG और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के अलावा कई विदेशी राजनयिक भी वहां पे मौजूद हो सकते हैं, इस तरह की भी खबरें हैं. बिल्कुल, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि
तमाम जो स्तरीय जो अतिथि हैं, जो उनका एक जमावड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम कहें कि जो चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री हो और या फिर जो आयुष के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं, और हम देखेंगे कि थोड़ी ही देर बाद जब इस वैश्विक केंद्र का उद्घाटन होगा, खासतौर से जो आधारशिला रखी जाएगी, और कुछ सेंटर ऐसे हैं ओम प्रकाश जो कि कल से ही उसका शुभारंभ भी हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जामनगर में पहले से ही आयुर्वेद का जो विश्वविद्यालय है वो स्थापित है, और इसी वजह से जामनगर को चुना गया है कि भारत में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पर आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का विस्तृत अध्ययन पहले से ही किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऋषि, तो हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद ही प्रधानमंत्री का आगमन होगा और उसके बाद हम अब देखेंगे WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसका शिलान्यास रखा जाएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कि जामनगर में ग्लोबल सेंटर उत्कृष्टता का केंद्र होगा जो साक्ष्यों और अनुसंधान के उपयोग को बढ़ावा देगा। जामनगर में बनने वाले केंद्र के माध्यम से ट्रेडिशनल मेडिसिन को मॉडर्न साइंस से जोड़ने में मदद मिलेगी। ये सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेफ और इफेक्टिव होने का एविडेंस और डेटा उपलब्ध कराएगा। इससे ट्रेडिशनल मेडिसिन को नेशनल हेल्थ सिस्टम से जोड़ा जा सकेगा, जिससे कि हर उम्र के लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन का पूरा फायदा उठा सकेंगे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया भी इस मौके पर उनके साथ मौजूद थे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है जिसका मकसद उच्च गुणवत्ता वाली आयुर्वेद चिकित्सा को दुनिया भर के लोगों के लिए सर्वसुलभ बनाना है। यहां आधुनिक तकनीक की मदद से आयुर्वेद पर बहुविषयक शोध किए जाते हैं। और WHO के महानिदेशक आज गुजरात में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के उद्घाटन शिलान्यास में शामिल होंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के अपने दौरे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने कहा कि जामनगर में स्थापित होने वाला ये अपनी तरह का पहला केंद्र है जो पूरी दुनिया को पारंपरिक चिकित्सा में निवेश करने में मदद करेगा। I have been really exposed to the potential that India has in traditional medicine from early childhood, and it's one of the most diverse actually globally in terms of the potential India has. And I'm very, very glad that our global center will be in India. This is the first of its kind, and it's the only one. A global center that will help the whole world to invest in traditional medicine. और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज बनासकांठा में बनास डेयरी के एक नए कॉम्प्लेक्स और आलू प्रोसेसिंग प्लांट देश को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी पिछले कई वर्षों से स्थानीय समुदायों, विशेष रूप से किसानों और महिलाओं के सशक्तिकरण का केंद्र बन गई है। उन्होंने बनासकांठा जिले के दियोदर में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने और आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। पीएम मोदी ने शहद उत्पादन पर अधिक ध्यान देने के लिए बनास डेयरी की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात की यात्रा के दूसरे दिन दुग्ध उत्पाद के क्षेत्र में बड़ी सौगात प्रदान करते हुए बनासकांठा जिले के दियोदर में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए एक नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। नया डेयरी परिसर एक हरित क्षेत्र परियोजना है। ये संयंत्र प्रतिदिन लगभग 30 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण में सक्षम होगा। लगभग 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन खोया
और 6 टन चॉकलेट का उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। आज यहाँ जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। आलू प्रसंस्करण संयंत्र में विभिन्न प्रकार के प्रसंस्कृत आलू उत्पादों जैसे फ्रेंच फ्राइज, आलू चिप्स, आलू टिक्की, पैटीज आदि का उत्पादन करेगा, जिन्हें कई अन्य देशों को निर्यात किया जाएगा। ये संयंत्र स्थानीय किसानों को सशक्त बनाएंगे और क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरेज गाय, मैसानी भैंस और यहाँ के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। बनास डेयरी तो किसानों को आलू का उत्तम बीज भी उपलब्ध कराती है और आलू के बेहतर दाम भी देती है। और ये सिर्फ आलू तक सीमित नहीं है। मैंने लगातार स्वीट रिवॉल्यूशन की बात की है। शहद से किसानों को अतिरिक्त आय से जोड़ने का आह्वान किया है। इसको भी बनास डेयरी ने पूरी गंभीरता से अपनाया है। पीएम मोदी ने पालनपुर में बनास डेयरी संयंत्र में पनीर उत्पादों और मट्ठा पाउडर के उत्पादन के लिए विस्तारित सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही गुजरात के दामा में स्थापित जैविक खाद और बायोगैस संयंत्र भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। पीएम मोदी ने खिमाना, रतनपुरा, भिलुडी, राघनपुर और थावर में स्थापित होने वाले 100 टन क्षमता के 4 गोबर गैस संयंत्रों की आधारशिला भी रखी। बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया गया है और 4 गोबर गैस प्लांट का शिलान्यास हुआ है। ऐसे अनेक प्लांट्स बनास डेयरी देश भर में लगाने जा रही है। ये कचरे से कंचन के सरकार के अभियान को मदद करने वाले हैं। एक तो इससे गांवों में स्वच्छता को बल मिल रहा है, दूसरा इससे पशुपालकों को गोबर का भी पैसा मिल रहा है, तीसरा गोबर से बायो सीएनजी और बिजली जैसे उत्पाद तैयार हो रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो जैविक खाद मिलता है उससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी और हमारी धरती माँ को बचाने में भी हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया। उन्होंने संयंत्र में मौजूद विशेषज्ञों से डेयरी और आलू प्रसंस्करण के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के बारे में जानकारी हासिल की। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। What does this recognition mean to you? It was a complete bolt from the blue. You know, Booker, I've heard of the Booker, but Booker is somewhere there. You know, I'd never really brought it into my. એને સ્વીકાર કરતું રહ્યું છે, જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં પોતાને ઇનપુટ આપે છે, જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં બીજાનું લેવામાં આવે છે અને એ રીતે એક ઇન્ટરેક્શન ચાલ્યા કરે છે। વડાપ્રધાનની જે તમે વાત કરી એમની ખાસિયતોની, એમાં એક ખાસિયત બીજી એ પણ છે કે જે દેશમાં જાય ને ત્યાં
આવું તેવું પણ હોય, આવી વસ્તુઓ જ્યાં જોવા જરૂરી હોય માનવના કલ્યાણ માટે, ભારતીયોના કલ્યાણ માટે તો ખરું જ, પણ માનવ કલ્યાણ માટેનું કશું એમના ધ્યાનમાં આવે તો એને એ વખતે તરત જાહેર નથી કરતા, પણ એને ધ્યાનમાં રાખે છે અને પછી અહીંયા આવીને જે તે વિભાગને એના વિશે સૂચના આપીને એમને કહે છે કે ભાઈ આના પર તમે જુઓ તો આ શું થઈ શકે એમ છે, આમાં આપણને કેટલો ઉપયોગી થઈ શકે એમ છે, આપણે આમાં શું આગળ કરી શકીએ છીએ. આવા અનેક કિસ્સા છે. એમણે ટેકનોલોજીની ઉપયોગને પણ આ રીતે લીધું છે, અમુક ક્ષેત્રોને ડેવલપમેન્ટ માટે પણ આવી રીતે કામગીરી કરેલી છે. અને એ જ કારણે બહુ સાચી વાત એ છે કે એ જ કારણે આજે જે સેન્ટર થઈ રહ્યું છે જામનગરમાં ઉદ્ઘાટન, એનો ખાતમુહૂર્ત, એનો આ પાછળનો જે આખો જે વિચાર છે, એની જે પદ્ધતિ છે, જે પ્રક્રિયા છે લાંબી, એની પાછળ આ જ છે કે એમને ધ્યાનમાં આવ્યું છે કે બીજે બધે પણ છે તો ચાલો એને એક જગ્યાએ લાવો, આપણે એને ઉપયોગમાં લઈએ. એટલે એ રીતે હવે આ કામગીરી કરી રહ્યા છે. એટલે એ જ ગુણ છે એક વૈશ્વિક નેતાના. જ્યારે કોરોના કાળમાં પણ આપણે જોયું હતું કે જ્યારે એ પ્રકારની સ્થિતિ ઉદ્ભવી હતી ત્યારે એમણે સ્થાનિક ને પ્રાદેશિક એક પ્રદેશના જુદા જુદા દેશના નેતાઓ સાથે પણ વાત કરી હતી અને બધે પાસેથી ઇનપુટ્સ માંગ્યા હતા કે કેવી રીતના આ દિશામાં આગળ વધી શકાય, આમાં કયા પગલાં લઈ શકાય, કારણ કે એક બિલકુલ નવી બીમારી હતી. એટલે દરેક દેશના ઇનપુટ્સ પણ લીધા હતા. એક વર્ચ્યુઅલ એમણે મીટિંગ પણ કરી હતી, ઘણી બધી વર્ચ્યુઅલ મીટિંગ કરી હતી અને વારંવાર કહેતા હતા કે ભાઈ 100 વર્ષમાં, એટલે પ્રેક્ટિકલી એવો કોઈ માણસ આપણી પાસે હાજર જ નહોતા કે આવી બી કોઈ બીમારી જોઈ હોય. 100 વર્ષે આવેલી આટલી મોટા પાયાની બીમારી હતી ને એટલી ઝડપથી ફેલાતી હતી અને ક્યારેક ઘાતક પણ બની જતી હતી. એટલે એ સંજોગોમાં એમણે જે પગલાં લીધા, જે લોકો સાથે ઇન્ટરેક્શન સતત એમ્સના ડોક્ટર સાથે સંપર્કમાં હતા, એ એમ્સના ડોક્ટર્સ પોતે પણ વારંવાર કહેતા હતા કે ભાઈ અમારે એની એક કમિટી બનાવવામાં આવી હતી. તો બહુ જ નિયમિત રીતે એમની સાથે વાત કરીને ઇનપુટ્સ લેવામાં આવતા હતા અને એ કારણે જ કદાચ એ વિશ્વસ્ત પણ હતા કે ભાઈ ભલે આ અત્યારે આટલો મોટો લાગતો હોય પણ સમય આવશે ત્યારે અને વેક્સિનેશનને કારણે એને બિલકુલ, એટલે ત્વરિત પગલાં જ્યારે જે તે સમય એના ઉપાયો અને આમાંથી નીકળવાના શું ઉપાયો થઈ શકે એ દિશામાં અવગત રહેતા હતા, સતત અવગત રહેતા હતા. અને એ જ દિશામાં એમનું આ એક અહેમ કદમ કે ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિન, જેનું હમણાં જ ઉદ્ઘાટન પ્રધાનમંત્રી થોડી જ ક્ષણોમાં કરવાના છે. દર્શક મિત્રો, આ કાર્યક્રમ આપણે જીવંત જોઈશું જ્યારે પ્રધાનમંત્રી આ કાર્યક્રમ માટે અહીંયા આવી પહોંચશે. આ વિશેષ ચર્ચામાં અમારી સાથે આજે અલ્કેશ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને દર્શક મિત્રો, આ ચર્ચાને અહીંયા સમાપ્ત કરીએ છીએ અને હવે થોડીક ક્ષણોમાં પ્રસ્તુત થશે સમાચાર. નમસ્કાર. મનની વાત છે, જન જનની વાત. અમુક કિસ્સા સંઘર્ષના તો અમુક વાત સફળતાઓની, વણ કહ્યા વારસાની, આશાઓ નવા ભારતની. મહિનાના આખરી રવિવારની રહે છે પ્રતીક્ષા. મલયાચલના પાલવથી વિંધ્યાચલના આંગણ સુધી, બ્રહ્મપુત્રાના ઘાટથી હિમાલયના વ્યાપ સુધી થાય છે મનની વાત પ્રધાનમંત્રીની સાથે. તો સાંભળો આ મહિને 24 એપ્રિલ સવારે 11 વાગે મનની વાત. આકાશવાણી અને દૂરદર્શનની બધી ચેનલ્સ પર મનની વાતના પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં અનુવાદનું પુનઃ પ્રસારણ આપ સાંભળી શકો છો રાત્રે 8 વાગે આકાશવાણી અને દૂરદર્શનની બધી પ્રાદેશિક ચેનલો પર. તો યાદ રાખો, રવિવાર 24 એપ્રિલ સવારે 11 વાગે મનની વાત. પોપટ જાણીને પ્રીત કરી હતી ભલા માણા, અને તું તો હુડલો નીકળો. તારી બોલી મને મેઠી લાગે, તારી બોલી મને બહુ પ્યારી લાગે. હા, તારા દરવાજે નોબતો વાગે, ઓહો વાગે બાતીજી અલબેલા. તારું ડેરું ગગનમાં ગાજે બાતીજી અલબેલા. શબ્દ લાગે ધ્યાન ધણીને આગે, હે તંબુરો વાગે, ઓ તંતર વાગે. सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं, उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं,
फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। को आज श्रद्धांजलि दी गई। सुरिंदर सिंह कल पुलवामा के काकापोरा इलाके में हुए आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई बीमा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की समय सीमा 19 अप्रैल 2022 से 180 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी गई। नीति का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है ताकि कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए प्रतिनियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा कवच प्रदान करना जारी रखा जा सके। इस आशय का एक पत्र 19 अप्रैल 2022 को सभी राज्य, संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों और निजी स्वास्थ्य कर्मियों सहित उन 22.12 लाख स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपए का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो कोविड-19 रोगियों की देखभाल कर रहे और सीधे संपर्क में रह रहे और जिन्हें कोविड-19 से प्रभावित होने का खतरा हो सकता है। योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक 1905 स्वास्थ्य कर्मियों के दावों का निपटारा किया जा चुका है, जिनकी कोविड संबंधित कर्तव्यों के लिए तैनाती किए जाने के दौरान मृत्यु हो गई थी। और नजर डालते हैं देश में कोरोना की ताजा स्थिति पर। स्वास्थ्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बपोर पछी जामनगરની મુલાકાતે જામનગર એરપોર્ટ ઉપર મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને સાંસદ પૂનમ માડમે કર્યું સ્વાગત। મોરેશિયસના પ્રધાનમંત્રી પ્રવિંદ જુગનાથ પણ પહોંચ્યા જામનગર। પીએમના સ્વાગત માટે સોરઠની ઝાંખી કરાવતો ભવ્ય રોડ શોનું કરાયું આયોજન। प्रधानमंत्री विश्वना सौप्रथम पारंपरिक चिकित्सा मेडिसिन सेंटरनो जामनगरमां करशे शिलान्यास। कार्यक्रममां मोरेशियसना पीएम अने केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया रहेशे हाजर। विश्व आरोग्य संस्था WHO द्वारा आ सेंटर जामनगरमां शरू कराता गुजरातवासीओमां हर्षनी लागणी। प्रधानमंत्री आज दियोदर खाते बनासकांठा डेरी अने बटेटा प्रोसेसिंग यूनिटનું કર્યું ઉદ્ઘાટન। કહ્યું બનાસ ડેરીએ ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે આવકની અમર્યાદિત સીમાઓ ખોલી। સાથે વારાણસીમાં પણ બનાસ ડેરી શરૂ કરવા બદલ કાશીના સાંસદ તરીકે પણ ડેરી તંત્રનો માન્યો આભાર।
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, બનાસ ડેરીએ ભારતના લોકલને ગ્લોબલ બનાવવામાં ભજવી મહત્વની ભૂમિકા. બનાસ ડેરીના નવા પ્લાન્ટને રાષ્ટ્રને સમર્પણ કરતાની સાથે પ્રધાનમંત્રીએ ડેરીના સ્થાપક ગલબા કાકાને કર્યા યાદ. કહ્યું, 60 વર્ષ પહેલા ખેડૂતના દીકરાએ વાવેલું બીજ બન્યું વટવૃક્ષ. પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલે કહ્યું, બનાસ ડેરી અનેક મહિલાઓને બનાવી આત્મનિર્ભર. તો મુખ્યમંત્રીએ બટાટા પ્રોસેસિંગ યુનિટ કોઓપરેટિવ ક્ષેત્રની છે સૌથી મોટી દેન. તો બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકર ચૌધરીએ બનાસ ડેરીના વિકાસમાં પ્રધાનમંત્રીના વિઝનને ગણાવ્યું મહત્વનું. પ્રધાનમંત્રી આવતીકાલે દાહોદને 21,000 કરોડના વિકાસના કામોની આપશે ભેટ. ગાંધીનગરમાં વર્લ્ડ આયુષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને નવાચાર શિખર સંમેલનનું કરશે ઉદ્ઘાટન. સંમેલનમાં આયુષ ક્ષેત્રે રોકાણની વધારવાની સાથે ઇનોવેશન, અનુસંધાન અને વિકાસ સાથે સ્ટાર્ટ ઇકોસિસ્ટમને આગળ વધારવાની દિશામાં થશે કામગીરી. રાજ્યના તમામ જિલ્લાઓમાં 22 એપ્રિલ સુધી આરોગ્ય મેળાનું આયોજન. આયુષ્માન કાર્ડ, હેલ્થ આઈડી કાર્ડ તેમજ સ્ક્રીનિંગથી સારવાર સુધીની સેવાઓ મળશે એક જ સ્થળે. સતત બીજા દિવસે શેરબજાર રેડ ઝોનમાં. આજે બીએસઈનો સેન્સેક્સ 703 અંકના ઘટાડા સાથે 56,462 પર થયો બંધ. તો એનએસઈનો નિફ્ટી 215 અંકના ઘટાડા સાથે 16,958 પર થયો બંધ. એચડીએફસી એસબીઆઈ ટોપ લૂઝરમાં થયા સામેલ. સમાચાર વિગતવાર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતની 3 દિવસની મુલાકાતે છે. રાજ્યની મુલાકાતના બીજા દિવસે તેઓ વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠનના સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિનનું ખાતમુહૂર્ત કરવા જામનગર પહોંચી ચૂક્યા છે. સેન્ટરના શિલાન્યાસ સમારંભમાં ભાગ લેવા વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના વડા ટેડ્રોસ એડનોમ અને મોરિશિયસના પ્રધાનમંત્રી પ્રવિંદ જુગનાથ પણ જામનગર પહોંચી ચૂક્યા છે. जामनगर एयरफोर्स स्टेशन खाते ट्रेडिशनल मेडिसिन की आज आधारशिला उसकी रखी जाएगी और प्रधानमंत्री इस मौके पर जामनगर में मौजूद हैं और साथ में आप देख सकते हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस। Honorable Prime Minister Modi, Honorable Prime Minister Mr. Jugnauth, Director General WHO, and all the other distinguished dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen. It's a pleasure and delight and an honor to be welcoming all of you on this very momentous, historic and a path-breaking event, as shortly we are going to be witnessing the groundbreaking ceremony of WHO's GCTM, the Global Center for Traditional Medicine, which is coming up here in the vibrant state of Gujarat, and the dynamic city of Jamnagar with the support of Government of India. And a center, ladies and gentlemen, which is being established to harness the potential of traditional medicine from across the globe through modern science and technology so that it can benefit the entire mankind. And it is so very befitting, ladies and gentlemen, that as we have the center coming up, it is coming up, the first of its kind center, the first and the only global outposted center of traditional medicine coming here in India, which is the hub of traditional medicine. And then being inaugurated by none other than but Honorable Prime Minister Modi. Ladies and gentlemen, as you know, he's been a very strong promoter and propagator of traditional medicines and systems and practices, and also beyond that himself, he has been an ardent follower of that. The world knows him also as a yoga sadhak. And ladies and gentlemen, not a single day goes when our Honorable Prime Minister Modi does not practice yoga and the meditation, the avartan dhyan, the cyclic meditation. And it has been because of the persistent and the consistent efforts of Honorable Prime Minister Modi that today we have seen the world accepting yoga,
moving towards accepting Ayurveda, and then moving towards a more integrated and holistic system of medicine for overall wellness. And that we have seen the world also accepting his leadership during the COVID times. That, ladies and gentlemen, is our charismatic leader, Honorable Prime Minister Modi. We are also very delighted to have our special invitee, His Excellency Mr. Praveen Kumar Jugnauth, the Honorable Prime Minister of the Republic of Mauritius. Ladies and gentlemen, as you might be aware, Mauritius is one of the rare countries outside India which has a very dedicated policy framework towards traditional and complementary medicine. The Ayurveda medicines there are legalized and are governed by law, and then the Mauritian endemic flora has been recorded to be used almost now for 300 years. We have the Honorable Prime Minister of Mauritius along with the huge delegation of Mauritius present here. Thank you, Honorable Prime Minister, sir, for joining us today. And then, ladies and gentlemen, this global center is coming under the visionary leadership of the Director General of WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, who has been foreseeing the implementation of the WHO's Traditional Medicine Strategy 2014-23, which supports countries in developing their action plans and their policies so as to strengthen the role of the traditional medicine as they move towards achieving universal health coverage in their respective countries. Must we also mention here, ladies and gentlemen, that of the 194 member states of WHO, 170 have already recognized the use of Ayurveda and of the traditional medicines. And in fact, the governments around the world have asked WHO for the support towards creating a body of reliable evidence and data on traditional medicinal practices and products. We thank Dr. Tedros for the initiatives which he has been taking towards promoting traditional medicine from across the globe and taking the rich heritage of India and also choosing India as a hub for the global center. And then, ladies and gentlemen, as you all know that Jamnagar already has a center of repute, the ITRA, which is there. Jamnagar, in fact, has been able to carve a niche as a pioneer of Ayurvedic medicine research and academia. And it is further casting impressive footprints under the leadership of the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Rajnikant Patel. It's a proud moment for the whole state, Chief Minister. Thank you, Honorable Chief Minister, sir. Further, ladies and gentlemen, as you're aware, the Government of India has been working towards building synergies of energy between the Health Ministry and the Ministry of Ayush so as to catalyze the potential of traditional medicine and the modern science so as to take the benefits to the people and for the greater well-being of the entire mankind. Towards that, we also have Dr. Mansukh Mandavia ji, the Honorable Minister for Health and Family Welfare. Government of India is also the Minister of Chemicals and Fertilizers. And as we extend our greetings to all, I would like to now request the host ministers. May I request Shri Sarvanand Sonowal, the Honorable Minister of Ayush, and requesting also the Honorable Minister of State for Ayush, Dr. Munjapara Mahendra Bhai, to please felicitate our dignitaries by presenting them the shawl. It's a great moment for us, felicitating our Honorable Prime Minister Modi. Ladies and gentlemen, under the able leadership of Honorable Prime Minister Modi, Ayurveda today is not just an alternative, but in fact it is the basis of India's health policy. Felicitating now the Honorable Prime Minister of Mauritius, Dr. Tedros, already thanked and felicitated. And also
may I request the shawl being presented to the Honorable Chief Minister of Gujarat. आभार व्यक्त करते हैं श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल जी का और डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। Ladies and gentlemen, let's mark this auspicious occasion as per our Indian traditions. In India, we strongly believe that whenever we take a new work, we invoke the blessings of Lord Ganesha, who is the Lord of many happy new beginnings and the Lord of prosperity. And we also invoke the blessings of Lord Dhanvantri, the benevolent Lord who is the remover of all fear and diseases from the face of humanity. So we have the Ganesh Vandana and the Dhanvantari Vandana by the students of Ayurveda, and they have come from different parts of the country. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारहितान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुक् भयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधोषधीनां सद्योमवातावनिवारिवह्निं पञ्चप्रपञ्चात्मकदेहभाजं सन्तापसम्पातजरा ज्वरान्तकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीननीरमुदकान्तिकान्तं शान्तं हरेर्द्वादशमाख्यमूर्तिं पूर्तिं शतानां सुमनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। So that
that's the auspicious beginning with an invocation to the Vignaharta and to Lord Dhanvantri. And at the onset, I now request the host minister, the Honorable Minister of Ayush, Shri Sarbanand Sonowal, under whose guidance, ladies and gentlemen, the Ayush Mantralaya has been taking various research and development activities. I request him and invite him for his welcome address. Namaskar. Most respected Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of Mauritius, Shri Praveen Kumar Jagannath ji, Honorable Director General WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Government of India, Shri Mansukh Mandaviya ji, Honorable Minister of State of Ayush, Shri Manjupara ji, respected Minister from the State of Gujarat, Honorable MPs and MLAs, invited Ambassador, High Commissioner, diplomats of foreign embassies, international guests, officers from the Ministry of Ayush, Government of India, officers from the State of Gujarat, members from media, organizers, ladies and gentlemen. It is my proud privilege to welcome you all at this historic event of the history, that is the groundbreaking ceremony for the establishment of world's first Global Center for Traditional Medicine. WHO has been effectively fostering collaboration amongst the member nations in the realm of traditional medicine since year of its establishment. It has identified and acted upon various priority areas of cooperation amongst member states. The establishment of Global Center for Traditional Medicine in India is a remarkable fulfillment of the commitment by WHO made during one of the toughest times currently faced by humanity is beyond matched. I am happy that the difficult times of COVID-19 has not constrained us from going ahead on this agenda. The commitment of ensuring public health as the foundation for sustainable social and economic development and poverty reduction can be realized only by strengthening the traditional system of medicine. It is the wisdom developed of observation, experimentation, and practices over thousands of years which are documented in coded form. It is of prime importance for member states to work together to integrate modern science with the codified system of traditional medicine. This would help the scientific community and the states to achieve the challenges like antimicrobial resistance, growing incidence of age-related disorders, non-communicable diseases, as well as to achieve the objective like tuberculosis-free world. I am sure that the upcoming center would certainly address such important issues. India has been proven pioneers in the field of traditional medicine since time immemorial. The knowledge sharing and cooperation has been documented in history, and in continuation of the same, focused efforts have been relentlessly undertaken by the Ministry of Ayush, Government of India. The establishing of the Global Center is an effort to bring synergy and cooperation in this domain would benefit all the member states. While mentioning the exponential growth of the Ayush Ministry in India under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we have noticed increased budgetary allocation
launch of Central Government National Ayush Mission for the development of Ayush sector in a focused way through the state and union territories government. Performance of yoga, where Ministry of Ayush has successfully organized 7 International Day of Yoga on 21st June every year since 2015. The International Day of Yoga main event in our country is led by Honorable Prime Minister, who is also involved to Guinness World Records. Ayush has been also characterized by involvement of technology, where access to people is through mobile apps and portals, and through education reforms as well as of doing business. The ministry is under a stage of transition, so much so that the present turnovers of Indian Ayush industry is $18.1 billion from $3 billion in 2014. India has been a sound strategic partner to WHO since years by establishing WHO Global Center at Jamnagar, Gujarat, India. It will provide for closer interaction among the academicians, researchers and experts, which should in turn result in a synergistic and exponential growth of traditional system and practices. This new center will support to implement WHO traditional medicine strategy and support to the nation in developing policies and action plans to strengthen the role of traditional medicine as part of their journey to universal health coverage. On behalf of the Ministry of Ayush, Government of India, I profoundly thank Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for his outstanding initiative and continuous guidance for making WHO Global Center of Traditional Medicine a reality in Jamnagar, Gujarat, India. I also thank Honorable Prime Minister of Mauritius, Shri Praveen Kumar Jagannath, for gracing the occasion and expressing his solidarity through his presence today. I especially thank Director General WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus for his visionary decision towards establishing WHO Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat, India. Thank you. Jai Hind. Thank you very much, sir. And ladies and gentlemen, as we mentioned to you earlier, Jamnagar has been able to carve a niche as a pioneer in Ayurvedic medicine research and academia. It already has an institute of national importance with the ITRA, and now another feather in the crown with the Global Center coming up here. The Global Center's interim office is going to be there in ITRA. And while Jamnagar will continue to be the hub, the center has been designed to cater to the needs, to engage and to benefit all regions of the world. That way Jamnagar is going to be soon becoming the hub of traditional medicine. A very happy occasion and of course a proud moment for all in Jamnagar and especially for the Chief Minister of Gujarat. And we now look forward to his views and expressions on this important occasion, inviting the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Rajnikant Patel ji. વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા WHO અને ભારત સરકારના આયુષ મંત્રાલયના સહયોગથી શરૂ થનાર ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિનના ભૂમિપૂજન ઉપસ્થિત વિશ્વ નેતા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, મોરેશિયસના પ્રધાનમંત્રી શ્રી પ્રવિન્દ કુમાર જુગનેત, WHOના ડિરેક્ટર જનરલ ડોક્ટર ટેડ્રોસ એધનોમ, केंद्रीय मंत्री श्री सबानंद सोनेवाल, डॉक्टर मनसुखभाई मांडविया, डॉक्टर महेंद्र भाई पुंजपरा अने सौ महानुभावों अने भाईओ अने बहनों, सौने मारा नमस्कार।
પરંપરાગત ચિકિત્સા પદ્ધતિના શોધ સંશોધન અને તેના અમલ દ્વારા જામનગર હવે વિશ્વમાં વેલનેસ એન્ડ પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ કેરના નકશે ચમકવાનું છે. મિત્રો, દેશ અને દુનિયા જે આજે વિચારે છે તે બાબત શ્રી નરેન્દ્રભાઈ અગાઉથી વિચારીને દીર્ઘદ્રષ્ટિપૂર્ણ વિઝનરી લીડર બન્યા છે. વડાપ્રધાનશ્રીના દિશા દર્શનમાં યોગ તથા આયુર્વેદનું જે જ્ઞાન અને પરંપરાગત ચિકિત્સાનો જે પ્રાચીન વારસો છે તે આજે સૌની આરોગ્ય વૃદ્ધિના હેતુથી એક અલગ જ સ્વરૂપે પ્રસ્તુત થઈ રહ્યો છે. બહુજન હિતાય બહુજન સુખાયના સૂત્ર આ હોલિસ્ટિક ચિકિત્સાથી વિશ્વમાં સાકાર થવાનું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ગ્લોબલ હેલ્થ ફેસિલિટીઝના નકશા ઉપર જામનગરને કાયમના ધોરણે અંકિત કરી દીધું છે. અગાઉ જામનગરના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટીચિંગ એન્ડ રિસર્ચ ઇન આયુર્વેદને રાષ્ટ્રીય મહત્વની સંસ્થા જાહેર કરીને વડાપ્રધાનશ્રીએ જામનગરમાં ગ્લોબલ સેન્ટરની સ્થાપનાનો પાયો નાખ્યો હતો ને હવે WHO આખા વિશ્વમાં ભારતને ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિનની સ્થાપના માટે પસંદ કર્યું છે. તે માટે આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો અને WHOના વડાનો હું આભાર માનું છું. ભારતમાં આયુર્વેદ યોગ જેવી પ્રાચીન પરંપરા ઉપચાર પદ્ધતિઓનો ખજાનો રહેલો છે. કહેવાય છે કે આયુર્વેદના પિતામહ ધન્વંતરી સમુદ્ર મંથનને અંતે અમૃત કળશ લઈને પ્રગટ થયા હતા. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દેશની આઝાદીના અમૃત મહોત્સવના વર્ષે આ ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિન રૂપી અમૃત કળશ દેશને ભેટ ધર્યો છે. 138 જેટલી પરંપરાગત ચિકિત્સા પદ્ધતિનું આ કેન્દ્ર આયુર્વિજ્ઞાનના આદાન પ્રદાનનો આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ બની રહેશે. ભારતની પરંપરાગત ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ માત્ર રોગ વટાળોમાં જ નહીં પરંતુ તેને જડમૂળથી દૂર કરવામાં અને ફરી તે ન થાય તેવી અસરકારક અને કારગત ચિકિત્સા પદ્ધતિઓ છે. આ પદ્ધતિઓ રોગને કોઈ પણ આડઅસર વિના જ મટાડે છે તેમજ શરીરને તે રોગ માટે લડવાની કુદરતી ક્ષમતા પ્રદાન કરે છે. સાથીઓ, આયુર્વેદ સહિતની આ પ્રાચીન ચિકિત્સા પરંપરાને આગળ વધારતા ગુજરાતના સપૂત અને દેશના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ સ્વતંત્ર ભારતના ઇતિહાસમાં પ્રથમવાર આયુષ મંત્રાલય શરૂ કર્યું છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ સૌથી અગત્યના 4 પ્રાથમિક ક્ષેત્રોમાં આયુષનો સમાવેશ કર્યો છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈની સરકારે આયુર્વેદ, યોગ અને અન્ય આયુષ પદ્ધતિઓને સાર્વજનિક સ્વાસ્થ્ય વ્યવસ્થાની સાથે સંયોજિત કરવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. 21મી સદીમાં આધુનિક વિજ્ઞાન સાથે આ પુરાતન જ્ઞાનને જોડવાનું મહત્વપૂર્ણ કાર્ય આ ગ્લોબલ સેન્ટરથી કરાશે. ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિનની સ્થાપના વડાપ્રધાનશ્રીનું આગવું કદમ છે. વડાપ્રધાનશ્રીના પ્રયાસોને કારણે વિશ્વ સમુદાયમાં ભારતનો સોફ્ટ પાવર વધ્યો છે. વિશ્વ આખાને એક પરિવાર સમજી સૌના સાથ, સૌની તંદુરસ્તી માટે આ ગ્લોબલ સેન્ટર ફોર ટ્રેડિશનલ મેડિસિન કાર્યરત બનશે એ વાત નિશ્ચિત છે. અહીં વિશ્વભરના આયુર્વેદના વિદ્વાનો, ચિકિત્સકો અને વૈજ્ઞાનિકો આવશે. તેમના જ્ઞાનનો સીધો લાભ ગુજરાત અને દેશની જનતાની સ્વાસ્થ્ય સુખાકારી માટે મળશે. ગુજરાતને આ ગ્લોબલ સેન્ટરના સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત કરાવવા બદલ ફરી એકવાર હું લોકલાડીલા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈનો સૌ ગુજરાતીઓ વતી હૃદયથી આભાર માની વિરમું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. Thank you, Honorable Chief Minister, sir, for your address. And ladies and gentlemen, as you know that Bangladesh, Bhutan and Nepal are among the 11 SEER members of WHO. Bhutan's national health policy includes the traditional and the complementary medicine, and in Nepal and Bangladesh, the national policy on traditional and complementary medicine is integrated into their national drug policy. On this momentous occasion, we've also received the messages from the Honorable Prime Ministers of Bangladesh, Bhutan and Nepal. Let's listen in to their message. Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I congratulate Prime Minister Narendra Modi and WHO Director General for opening the Global Center for Traditional Medicine.
It is my great pleasure to join you on this auspicious occasion. The emergence of COVID-19 pandemic has showed us the need to revisit our focus in ensuring good health and well-being of our people. I believe if the traditional medicine is practiced in tandem with the modern medicine, we may expect better outcome in ensuring basic healthcare for all, as envisioned in the SDG Goal 3. In this regard, I would like to thank WHO for playing its due role in combating the COVID-19 pandemic. Ladies and gentlemen, I am confident that the Global Center for Traditional Medicine will emerge as a global hub for evidence-based research and standards for traditional medicine. We appreciate the Center's strategic focus on sustainability, equity, and innovation. It is important that the ancient knowledge base of traditional medicine be combined with modern science and technologies to optimize its benefits. In Bangladesh, traditional medicine has always been a part of our history and cultural tradition. Our government integrated traditional medicine into our National Health Policy 2011. We have officially recognized the potential contribution of Unani, Ayurvedic and homeopathic medical services to our efforts in achieving SDG 3. We have 73 institutes that offer 4-year diploma courses and 4 colleges that offer bachelor degrees in traditional medicine. In addition to offering outpatient services by traditional medicine experts, most of our district and sub-district level public health facilities are equipped with medical plant gardens. We look forward to partnering with the Global Center on critical issues like quality control, curriculum development, and regulatory standards. We shall positively consider joint medical research projects in areas of our mutual interests. Excellencies, the efforts of Government of India under the dynamic leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi in controlling the COVID-19 pandemic and achieving massive vaccination coverage are really commendable. Bangladesh has also successfully controlled the pandemic and the first dose of vaccine covered 100% of the targeted population, while second dose 97%. The engagement, collaboration and exchange of COVID-19 related medicines and medical equipment between Bangladesh and India during the surge of pandemic has been considered role model of good neighborhood diplomacy. The whole world has seen how two neighbors support each other and work together during the time of crisis. I thank the Government of India and WHO once again for taking this much needed initiative. I wish this center all success. Thank you all once again. Your Excellency, Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, Dr. Tedros, DG WHO, ladies and gentlemen, I have the honor of conveying the warm greetings and good wishes of my King, the Queen and people of Bhutan. Although virtual, I am really excited to be part of this landmark initiative that is taking place in Gujarat today. The coming about of the WHO Global Center dedicated to traditional medicine, first of its kind, means a lot to us here in Bhutan. Thank you for giving me this opportunity to be part of this historic event. History has it that our country is also referred as the land of medicinal plants. This is because Bhutan's high mountains and valleys are fertile for varieties of medicinal plants and herbs, and we Bhutanese at large attach lots of spiritual values to it. And for me personally,
anything that contributes to a progressive healthcare and healing is an area that touches my heart the most. Like every medical practitioner, I also believe that traditional medicine complements allopathic treatment in offering wholesome healthcare. Traditional medicine is time-tested and plays a vital role in the healthcare system of 21st century. Just like the growing mood for healthy lifestyle and our obsession for organic food, the importance of traditional and alternate medicine is re-emerging as more people realize its real value. For the same reason, Bhutan always placed equal, if not more importance to traditional medical services. In Bhutan, we offer both traditional and allopathic medical services under one roof, giving people the option to choose between the two. We also have the system of cross-referral of patients between the practitioners of the two arms of the medicine. We consider this practice of integrated modern and traditional medicine as the best approach to wholesome health care of an individual. In a world where traditional medicine and its knowledge are put aside, Bhutan enjoys this unique blend. With the landmark global center coming up in Gujarat, we are hopeful of sharing our unique practices and resources at such global forum. As we all know, research, innovation and technology for traditional medicine or in the field of traditional medical practice is not widely explored or straightforward. We have to be cautious and be unique in the design of such research works in the field of traditional medicine. We should be able to retain its authenticity while infusing technology to it. Random integration of technology and conventional research approach into traditional medicine may not necessarily take us to the right direction. I am so happy that the center is taking this difficult task ahead. One immediate need would be to study the decline in natural medicinal resources, which I feel is mostly aggravated by climate change and human habits. We must explore ideas and technology to preserve and replenish the medicinal flora. This will also help in documenting and preserving the traditional medicine knowledge before it disappears. And as expected, Your Excellency Shri Narendra Modi once again rise to the occasion. We remember how your renewed efforts and dedication brought nations to celebrate International Yoga and Ayurveda Day every year. This time, you are stepping up to strengthen the traditional medicine at global stage. These commitments reflect your kindness, generosity, and compassion, and this will go a long way in the pursuit of healthy living. I thank Prime Minister Modi and Dr. Tedros for this kind initiative. We Bhutanese believe in tendril, an auspicious beginning which will lead to promising outcomes. We see the right destination in India, which has the oldest and most diverse practices in traditional medicine, the perfect timing as we finally see light at the end of the pandemic, and compassionate beings like PM Modi ji and Dr. Tedros to lead this initiative. With this beginning, we are ensuring that traditional medicine and its benefits are harvested for the present and preserved for the future. I have no doubt that this initiative will be hugely successful and will offer traditional medicine its rightful place in our modern healthcare system. I thank you all and Tashidele. His Excellency Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Director General of WHO, Dr. Tedros, ladies and gentlemen, namaskar. I am delighted that India is hosting the first WHO Global Center for Traditional Medicine in Jamnagar, Gujarat. On this special occasion, I congratulate the Government of India and the WHO for this worthy initiative that will go a long way in the promotion and development of traditional medicine, including Ayurveda, for the well-being of the mankind. As global health problems continue to increase, the role of
traditional medicine is vital in ensuring holistic health care, including affordable health care, prevention of diseases, wellness, and overall improvement in human health. Our region is rich in traditional medicine since ancient time. Nepal and India are home to rich biodiversity, herbs, and medicinal plants. Our indigenous medical practice is based on nature and local knowledge. India has emerged as a global pharmaceutical and technology hub. India is already a leader in Ayurveda with its rich legacy of traditional medical practices. In this context, establishment of WHO Global Center for the Traditional Medicine in India will serve to advance the knowledge and the practice of traditional medicines and contribute to global health and wellness by utilizing their vast potential. I believe that WHO's involvement in promoting traditional medicine through evidence-based research, innovation, use of science and technology, and sharing of knowledge would contribute towards achieving health-related SDG 3. Before I conclude, I recommend Prime Minister Modi ji for this noble undertaking. This will be an important contribution towards universal access to health based on the synergy of medical traditions and knowledge and their scientific development. Thank you very much. That, ladies and gentlemen, were the Honorable Prime Ministers of Bangladesh, Bhutan and Nepal sharing with us the initiatives which they are taking in their respective countries, and also congratulating Prime Minister Modi and Dr. Tedros. And I'm sure for Dr. Tedros it's a moment of happiness and a moment of satisfaction as the center comes up. And Dr. Tedros, ladies and gentlemen, has spoken on various platforms that he strongly believes that harnessing the potential of traditional medicine when founded with evidence, innovation and sustainability can be a game changer for the healthcare. And towards that, various initiatives he has been taking, and today the passion with which he had been driving has come true in the form of the Global Center coming up here. So we look forward to his futuristic vision and his progressive views. Please join me, ladies and gentlemen, as I invite Director General WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, for his address. Thank you very much. Namaskar. Kem cho bada? Majama? Thank you. Gujarati ma avine Mane Bohu Meja Avi. Thank you. Namaste. Your Excellency Prime Minister Narendra Modi, Your Excellency Prime Minister Pravin Kumar Jugnauth, Honorable Cabinet Ministers, Your Excellency Chief Minister of Gujarat, Bhupendra Patel, I'm very, very happy to be here today with you. Before I start,
I should say that I have a special connection with India. I told this to His Excellency Prime Minister a number of times. I was told by teachers from India in my high school years and later in university when I was studying biology. And in fact, I learned about traditional medicine in India from an early age through those teachers of mine from India. So the WHO Global Center for Traditional Medicine is not a coincidence. My Indian teachers taught me well also about traditional medicine, and I'm very grateful to them. By the way, I also grew up watching Bollywood films. And I understand that the Swiss Alps are a favorite destination for Bollywood fans. And the first film which I remember and which probably affected me like the Indian teachers of mine were Mamma India. The WHO Global Center for Traditional Medicine that we're launching will help to harness the power of science to strengthen the evidence base for traditional medicine. I'm grateful to Prime Minister Modi and to the government of India for their leadership in supporting this important initiative and the investment of $250 million to establish the center with an interim office, new location and building, and a 10-year commitment for operating costs. From the day I spoke to His Excellency Prime Minister Modi, his commitment was amazing, and I knew that this center would be in good hands, and that's what we're seeing. So thank you so much for your leadership, Your Excellency. This is a truly global project. 107 WHO member states have national governmental offices for traditional and complementary medicine. So this means India will go to the world and the whole world will come to India. Examples of traditional medicines being turned into modern medicines abound around the world, from throughout India, with such products as turmeric, neem and jamun, and from indigenous communities in Brazil to the Kalahari Desert. But when it comes to how these products are identified, developed and tested, and how the benefits are shared with the communities that nurtured them, on that there is still much work to be done. Today marks a critical step in helping to bring the promise of traditional medicine to fruition, to the benefit of people around the globe, helping to ensure that all people have access to safe and effective treatments is an essential part of WHO's mission. For many millions of people around the world, traditional medicine is the first part of call to treat many diseases. The new center will complement WHO's work on traditional medicine in headquarters, regional and country offices. It will focus on evidence, data, sustainability and innovation to support national policies and optimize the use of traditional medicine for health and well-being all over the world. Because traditional medicine is tied to the earth and the communities that have nurtured it, critical to the center's mission will be sustainability and equity, and the importance of respecting local resources and rights, including sharing intellectual property. The center's
5 main areas of work are: first, leadership and partnership in working with our global networks to support countries' research priorities for traditional medicine. Second, evidence and learning as we expand the knowledge base on traditional medicine, including with clinical trials and new holistic research methods appropriate to traditional medicine. Third, data and analytics. The 11th revision of the International Classification of Diseases by WHO will help to establish reliable data on the use of traditional medicine with the inclusion in WHO global surveys, including at the household level. Fourth, sustainability and equity for biodiversity, socio-cultural resources, intellectual property, and other issues. And fifth, innovation and technology, including an artificial intelligence project which has already started global mapping of patents and research, as well as links to the new WHO Innovation Hub. As WHO, universal health coverage is a top priority. At the same time, we recognize that countries face many challenges to provide essential health services for all people in a sustainable way. Traditional medicine has been an integral resource for health for centuries in communities around the world. It's still a mainstay for some with inequities in access to conventional medicine, but also because of their trust in traditional holistic knowledge, practices, and resources. WHO's traditional medicine strategy aims to help countries develop policies and plans to strengthen the role of traditional medicine based on solid science and evidence. Where appropriate, countries can integrate traditional medicine into modern health systems, especially at the primary health care level, and to promote its use by individuals and communities in holistic efforts to promote well-being. I know that India offers its citizens regulated services of Ayurveda, yoga, naturopathy, Unani, Siddha, Soa, Rigpa, and homeopathy. And the health workforce of registered Ayush practitioners is more than 800,000, which is almost equivalent to that of conventional medical practitioners. WHO is now working with the government of India as well as several other member states to study how this integrated approach has worked, including in health emergencies. In an ideal world, traditional medicine would be an option, a choice offered by a well-functioning, people-centered health system that balances curative services with preventive care in harmony with natural environments. In fact, the 2018 Declaration of Astana on primary health care took traditional medicine into account, and it can help countries on their path to universal health coverage. Improving equitable access to safe, quality, and effective traditional and complementary medicine services can both help to meet communities' needs and help to build culturally and environmentally sensitive primary health care. Traditional medicine is also part of the growing $1 trillion global health, wellness, beauty, and pharmaceutical industries. Over 40% of pharmaceutical formulations are based on natural products, highlighting the vital importance of conserving biodiversity and sustainability. In fact, the discovery of aspirin drew on traditional medicine formulations using the bark of the willow tree. The contraceptive pill was developed from the roots of wild yam plants, and child cancer treatments have been based on the rosy periwinkle. And Nobel Prize winning research on artemisinin for malaria control started with a review of ancient Chinese medicine. WHO's
COVID-19 research database has over 2,500 citations of traditional medicine, and traditional medicine publications are among the top 5 most downloaded on the WHO website. Today, traditional medicine faces challenges with regulatory issues such as the lack of systematic data and evidence, insufficient financial support for research, and not enough mechanisms to monitor the safety of traditional medicine practice. So, as yet, the contribution of traditional medicine to national health systems is not yet fully realized. This new global center for traditional medicine will be a powerful vehicle for taking their journey forward. So let me leave you with 4 priorities for going forward. First, for governments, academics, and practitioners around the world to engage with the WHO Global Center for Traditional Medicine to share knowledge and research from your own countries so that it can benefit the whole world. Second, to open health systems to relevant traditional and complementary medicine so that people have a choice to access services for their health and well-being in a way they find most acceptable and accessible. Third, for innovators, industry, and governments to develop traditional medicines in a sustainable, environmentally sensitive, and equitable manner. And fourth, to make sure that the communities which nurtured the traditional medicines also benefit from their development, including through sharing the fruits of intellectual property. I look forward to our continuing collaboration through the WHO Global Center for Traditional Medicine and to realizing the fruits of its work with global public goods that can be of benefit to all. Finally, before I end, I would like to close by again appreciating His Excellency the Prime Minister from the start, from day one, who has given it all he can and made it to this level. And I know this center, as I said earlier, is in good hands because I have seen the commitment in him, but not only in him, but I have seen the commitment at all levels. So thank you so much for agreeing to host this center. And indeed, as I said earlier, the world will come to India, Jamnagar, and India will also go to the world through traditional medicine. And I hope this will be one of the important things that will bring the world together, because it will have training component, it will have research component, it will have other things that will advance traditional medicine. Then maybe to my teachers, I will just, in respect of them, I will say a bit in Hindi. Namaste, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ. मेरे इंडिया गुरु जनों ने पारंपरिक चिकित्सा का परिचय किया है. I hope I said it well, but this is my respect to the teachers, to the all Indian teachers who have taught me and who have influenced me, to express my greatest respect and appreciation. And really glad to start this partnership with India also. Very important initiative that I hope, and I believe, not I hope, I believe will be a success. Abajo. Thank you, Dr. Tedros, for your appreciative message for India and for Honorable Prime Minister Modi, showing that confidence in India and the leadership of Honorable Prime Minister Modi, and also sharing with us the promise, the vision and the mission of this global center. And you definitely stole the heart of everyone present here by speaking in Gujarati. Tamumano abhar manu chu
Thank you, sir. And now, ladies and gentlemen, I take the distinct honor of inviting our special invitee, His Excellency Mr. Praveen Kumar Jugnauth, the Honorable Prime Minister of the Republic of Mauritius, for his address. Your Excellency Shri Narendra Modi ji, Prime Minister of India, Your Excellency Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of the World Health Organization, Your Excellency Shri Sarbananda Sonowal, Honorable Union Minister of Ayush and Ports, Shipping and Waterways, Your Excellency Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Chief Minister of Gujarat, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon, namaskar. આ મારી ગુજરાત રાજ્યની પહેલી મુલાકાત છે. આને પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી ના ગૃહ રાજ્યમાં આવીને મને ઘણો આનંદ થયો છે. It is indeed with great pleasure for me to attend this groundbreaking ceremony for the establishment of the World Health Organization Global Center for Traditional Medicine. I would like to thank all the organizers, the Government of India, and especially Shri Narendra Modi ji, Prime Minister of the Republic of India, for kindly associating Mauritius with this very important event. Since time immemorial, naturally occurring products such as plants and minerals have been used in the treatment of diseases. The use of herbal remedies transmitted through generations to cure the sick is still prevalent today. The World Health Organization recognizes that traditional medicine is the sum total of the knowledge, skill and practices based on the beliefs and experiences indigenous to different cultures. We have reached a critical moment in the use of herbal medicinal products. Many people worldwide rely on them for at least some part of primary health care. In view of the significance of natural products and traditional medicines, measures have to be taken to protect public health and address challenges associated with the effective monitoring of the safety of all herbal medicines. There could not be a more opportune time to set up this global center for traditional medicine than now. The center will compile evidence and data for the formulation of policies, standards and regulatory frameworks for safe, cost-effective and equitable use of traditional medicines. At the very outset, allow me to commend His Excellency Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, the Director General of the World Health Organization, for his vision to set up the WHO Global Center for Traditional Medicine. The center will no doubt contribute significantly towards harnessing the potential of traditional medicine. I would also wish to emphasize that this important institution
would not have seen the light of the day without the contribution of the government of India, and especially the personal contribution of Shri Narendra Modi ji, the Prime Minister of the Republic of India, for its financial support to the center's establishment, infrastructure and operations. We are extremely grateful to Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Government of India and the Indian people for this generous contribution. We appreciate that the WHO Global Center for Traditional Medicine, the very first and only global outpost of the WHO on traditional medicine, will be an accessible, eco-friendly and interactive facility showcasing global traditions and modern scientific advances in traditional medicine. Excellencies, let me seize this opportunity to recall that the practice of Indian traditional medicine in Mauritius started back in 1834 with our forefathers who arrived from India as the first indentured immigrants. The practice became part of our tradition and maintained its importance in the treatment of common ailments. Indeed, this prompted the official recognition of Ayurveda in the late 1980s. Mauritius introduced the Ayurveda and Other Traditional Medicine Act in 1989. Our country thus became one of the rare countries outside India where the practice of Ayurvedic treatment is duly regulated. I must point out here that soon after the adoption of the legislation, Mauritius hosted the first International Ayurveda Conference in 1990 at the Mahatma Gandhi Institute in Mocha. On this note, I wish to express our gratitude to the Jamnagar Gujarat University for offering scholarships to young Mauritian students who were admitted to the Bachelor in Ayurvedic Medicine and Surgery program in the early 1990s. Excellencies, Ayurvedic medicine started to be used officially at 2 mediclinics in Mauritius as from 2004. With a good response and increasing demand for such therapy, new outlets were later opened. Presently, we have 6 dedicated public clinics that provide Ayurvedic services and medicine to our people. In Mauritius, Ayurvedic clinics are run not only by the government, but also by NGOs as well as the private sector. Additionally, the Ayurvedic unit at the Ministry of Health and Wellness of Mauritius ensures training in Ayurvedic practice. Many in our country recall the visit to Mauritius in April 2016 of Shri Yeso Naik, then Minister of Ayush, during which a proposal was made for the observance of Ayurveda Day. The Government of India subsequently accepted our proposal. The first Ayurveda Day was celebrated in Mauritius in October 2016, and after that on Dhanteras Day every year. The Ayurveda Day has now become an annual celebration in Mauritius. It provides an opportunity to raise awareness and sensitize the population on the benefits of Ayurvedic medicines, treatment and plants. Shri Modi ji
You will recall your state visit to Mauritius in March 2015, during which our two countries signed a memorandum of understanding for the strengthening of cooperation in the field of traditional medicine and homeopathy, including the setting up of an Ayush chair. Significant groundwork has been completed towards the establishment of an Ayush Center of Excellence, including a state-of-the-art Ayush hospital in Mauritius. A consultant provided by the Indian government in assisting us in a feasibility study, and I'm pleased to announce that the center will be constructed on 12 acres of land at Côte d'Or City, in the center of Mauritius, with the support of the government of India. Excellencies, let me conclude by highlighting that traditional medicine is increasing its prominence in the world of modern science. Some 40% of approved pharmaceutical products in use today are derived from natural substances, and this underscores the vital importance of conserving biodiversity and sustainability. The potential for the sustained development of Ayurveda is immense, and the WHO Global Center in Jamnagar will be an accessible, eco-friendly and interactive facility showcasing global tradition and modern scientific advances in traditional medicine. In this regard, Mauritius is committed to working with the WHO and partner countries like India. I have no doubt that refocusing on the traditional ways of healing will enable us to mitigate and cure various diseases and ailments that are afflicting the whole of humanity in today's stressful world. Thank you for your kind attention. Thank you, Prime Minister Jugnauth, for sharing with us the progressive vision which you have for your country towards promoting traditional medicine and further very closely working with WHO and India. And now, ladies and gentlemen, the moment for which all of us have been waiting. We have now the groundbreaking ceremony of the Global Center for Traditional Medicine, and I would like to request Honorable Prime Minister Modi, Honorable Prime Minister Jugnauth, Dr. Tedros and all present to kindly unveil the WHO GCTM plaque. May I request Honorable Prime Minister Modi, Honorable Prime Minister Jugnauth to please move towards the plaque area. So, ladies and gentlemen, this is a place where the main center is going to be coming up in an acre of 35 acres, and that's close to 1,41,640 square meters, unveiled at the hands of our Honorable Prime Minister Modi. GCTM, ladies and gentlemen, this global center is going to be performing 5 main functions: leadership in management, evidence in learning, data and analytics, innovation and technology, sustainable development and equity. And the center is going to be further ensuring the safety, efficacy, quality, accessibility and the rational use of traditional medicines. Thank you once again to Honorable Prime Minister Modi for unveiling the plaque and laying the foundation for the GCTM. We now bring you a short video on GCTM.
Traditional medicine is widely used and increasingly relevant in the world today. Yet, it has been around for millennia. At a time when we were more in balance with our environment and in harmony with nature, we began looking into its healing powers to cure our aches and pains and discover our own remedies. Our understanding of traditional practices began to grow. Now over 80% of the world's population use traditional medicine. It's also the foundation for many modern medicines and practices. Some 40% of the approved pharmaceutical products in use today come from natural substances like tree barks and plant roots. So why don't national health strategies fully take all this into account? To answer these and other questions, we welcome the World Health Organization's new Global Center for Traditional Medicine. A bold new vision that starts in Jamnagar, Gujarat in India, but has a truly global reach. A center to support evidence and data, sustainability and innovation, bringing together the latest knowledge and technology to advance our understanding of methods already in use by billions of people. Catalyzing ancient wisdom and modern science has never been more needed as we strive towards our global health objectives to keep the world healthy and safe, to serve those in the most vulnerable situations and promote good health and well-being for everyone. Let's take a bold new look at this most ancient and most modern practice. Welcome to WHO's Global Center for Traditional Medicine. And ladies and gentlemen, if you've been wondering why Jamnagar is the strategic choice for this global center, we have the answer with this video. Many of the state-of-the-art traditional medicine systems that the world is familiar with in these contemporary times were born and bred in India. These practices were established thousands of years ago under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Narendra Modi. The path-breaking policy initiatives and new ideas of Government of India have ensured a monumental surge in the worldwide popularity of yoga and traditional Indian medicine on the world stage. And now, a landmark step in sync with the vision and efforts of the PM Narendra Modi towards Ayush and universal well-being is the establishment of the WHO Global Center of Traditional Medicine in Gujarat. WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और अब भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम होगा. This will strengthen India's position as a global leader in research and innovation in the traditional medicine sector. This will also help in making traditional medicines more accessible to the masses. The state will also benefit from the growth of medical value travel, as the milestone event puts India in the driving seat of the global traditional medicine sector. With an investment of $250 million from the Government of India, the Global Center will give a significant push to preventive and curative healthcare for the people of the state. It will greatly enhance the scope of affordable and accessible healthcare to all. As the GCTM aims to strengthen and streamline the research and development activity in the traditional medicine sector through education and training, Gujarat is set to become a hub for education, learning and skill development. So that's the reason, ladies and gentlemen, why India and Gujarat for GCTM.
Now for India, ladies and gentlemen, the year 2022 holds a special significance. For this year, we are celebrating 75 years of our independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. This is a milestone year for us, and in this milestone year, ladies and gentlemen, today India is a rising power under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, whom the entire world looks up to for his very bold and decisive leadership, and then for the humanity-oriented programs which he has been undertaking for the entire mankind. We have seen it during the COVID times. And once again, ladies and gentlemen, under the leadership of Honorable Prime Minister Modi, India is ready to take the lead, taking its heritage of traditional medicine to the furthest corners of the world so as to benefit the entire mankind, wishing the well-being of everyone. Ladies and gentlemen, as we look forward to the guidance and leadership of the outstanding global leader, Prime Minister Modi, with your applause, I invite Honorable Prime Minister Modi to address this august gathering. नमस्कार। मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण कुमार जुगनाथ जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सर्वानंद जी सोनवाल, डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई, यहां उपस्थित अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज हम सभी पूरी दुनिया में हेल्थ एंड वेलनेस के लिए एक बहुत बड़े आयोजन के साक्षी बन रहे हैं। मैं WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस का विशेष रूप से आभारी हूं। अभी डॉक्टर टेड्रोस ने भारत की प्रशंसा में जो शब्द कहे, मैं प्रत्येक भारतीय की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। और जिस प्रकार से उन्होंने गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी एक प्रकार से त्रिवेणी का एहसास कराया है और हर भारतीय के दिल को छू लिया है, उसके लिए भी मैं विशेष रूप से उनका अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर टेड्रोस से मेरा परिचय पुराना है और जब भी हम मिले हैं, उन्होंने भारत के गुरुओं ने उसको कैसे शिक्षा दी, वो इतने गौरव से उसका उल्लेख करते हैं और इतना प्रसन्न चित्त अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, और उनका भारत के प्रति जो लगाव है आज एक संस्थान के रूप में यहां प्रकट हो रहा है। और वो मुझे कहते हैं कि मेरा चाइल्ड है, मैं आपको दे रहा हूं, अब आपकी जिम्मेवारी है कि आपको इसका पालन पोषण करना है। मैं डॉक्टर टेड्रोस को विश्वास दिलाता हूं कि आपने जिस भरोसे से भारत को ये जिम्मेवारी दी है और जिस उत्साह और उमंग से हमारे यहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इस पूरी जिम्मेवारी को अपने कंधे पर लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी आशा और अपेक्षा के अनुसार हम खरे उतरेंगे। मैं अपने अभिन्न मित्र और मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री जुगनाथ जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। मेरा उनके परिवार से भी करीब 3 दशक पुराना संबंध रहा है। जब भी मॉरिशस गया, उनके घर जाना, उनके पिताजी से मिलना, उनके परिवार के सबसे संपर्क
3 दशक का ये पुराना नाता, और मुझे खुशी हुई है कि आज मेरे निमंत्रण वो मेरे होम स्टेट गुजरात में आए और उन्होंने भी गुजरात के साथ, गुजराती भाषा के साथ अपना नाता जोड़ करके हम सबका दिल जीत लिया है। अभी हमने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री के भी विचार सुने। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए सभी ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। मैं सभी का आभारी हूं। साथियों, WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन के सेंटर के रूप में भारत के साथ एक नई पार्टनरशिप की है। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के कंट्रीब्यूशन और भारत के पोटेंशियल दोनों का सम्मान है। भारत इस पार्टनरशिप को पूरी मानवता की सेवा के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में ले रहा है। ये सेंटर दुनिया भर में फैली पारंपरिक चिकित्सा से सहयोग से दुनिया के लोगों को बेहतर मेडिकल सॉल्यूशन देने में मदद करेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जामनगर की धरती पर डॉक्टर टेड्रोस और पविंद्र जी की हाजिरी में ये सिर्फ एक भवन का शिलान्यास नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक संस्थान का शिलान्यास नहीं हुआ है, लेकिन मैं विश्व भर में प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास करने वाले, परंपरागत चिकित्सा में विश्वास करने वाले हर किसी को कहना चाहता हूं कि आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस कालखंड में ये जो शिलान्यास हुआ है, वो शिलान्यास आने वाले 25 साल के लिए विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के युग का आरंभ कर रहा है। मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं कि होलिस्टिक हेल्थ केयर के बढ़ते आकर्षण के कारण आने वाले 25 वर्ष में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब ट्रेडिशनल मेडिसिन दुनिया के हर परिवार के लिए अति महत्व का केंद्र बन जाएगा। इसका ये शिलान्यास है। और आयुर्वेद में तो अमृत कलश का बड़ा महत्व है, और अमृत काल में ये कार्य का आरंभ हो रहा है। इसलिए मैं एक नए विश्वास के साथ एक दूरगामी प्रभावों का असर देख रहा हूं, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह बहुत सुखद है कि इस ग्लोबल सेंटर की स्थापना हमारे जामनगर में हो रही है। जामनगर का आयुर्वेद से एक विशेष रिश्ता रहा है। 5 दशक से भी ज्यादा पहले जामनगर में विश्व की पहली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। यहां एक बेहतरीन आयुर्वेद संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये ग्लोबल सेंटर वेलनेस के क्षेत्र में जामनगर की पहचान को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाई देगा। साथियों, डिसीज फ्री रहना, निरोगी रहना जीवन की सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, लेकिन वेलनेस ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। साथियों, वेलनेस का हमारा जीवन में क्या महत्व है, ये हमने
कोविड पैंडेमिक के इस दौर में अनुभव किया है। इसलिए विश्व को आज हेल्थ केयर डिलीवरी के नए आयाम की तलाश है। मुझे खुशी है कि इस साल के अवर प्लेनेट अवर हेल्थ ये नारा देकर डब्ल्यूएचओ ने भारत का वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन को आगे बढ़ाया है। साथियों, हमारे यहां हजारों साल पहले रचित अथर्ववेद में कहा गया है, जीवेम शरदः शतम, यानी 100 वर्ष तक जिए। हमारी परंपरा में 100 वर्ष की आयु की कामना बहुत सहज रही है, क्योंकि तब 100 वर्ष की आयु प्राप्त करना अचंभित नहीं करता था। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की होती थी। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रही है, बल्कि ये लाइफ की एक होलिस्टिक साइंस है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में हीलिंग और ट्रीटमेंट के अलावा सोशल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, एनवायरमेंटल हेल्थ, करुणा, सहानुभूति, संवेदनशीलता और उत्पादकता सब कुछ इस अमृत कलश में शामिल है। इसलिए हमारे आयुर्वेद को जीवन के ज्ञान के रूप में समझा जाता है और हमारे यहां जितनी प्रतिष्ठा 4 वेदों की है, वैसे ही आयुर्वेद को 5वां वेद कहा जाता है। साथियों, आज आधुनिक दुनिया की जो लाइफस्टाइल है, जो नई नई बीमारियां हम देख रहे हैं, उसे पार पाने के लिए हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अच्छी हेल्थ का एक सीधा संबंध बैलेंस डाइट से है। हमारे पूर्वज यह मानते थे कि किसी भी रोग का आधा उपचार बैलेंस डाइट में छिपा होता है। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां इन जानकारियों से भरी हुई है कि किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और इन जानकारियों का आधार सैकड़ों वर्षों का अनुभव है, सैकड़ों वर्षों के अनुभव का संकलन है। जैसे हमारे यहां भारत में एक समय था जब विशेष रूप से मोटे अनाज मिलेट्स के उपयोग पर हमारे बुजुर्ग बहुत बल देते थे। समय के साथ हमने इसका उपयोग कम होते भी देखा और आजकल फिर से मिलेट्स की चर्चा बढ़ते हुए देख रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत का प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस ने स्वीकार किया है। वर्ष 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करना मानवता के लिए बहुत हितकारी कदम है। एक्सेलेंसीज, अभी कुछ समय पहले भारत में जो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन शुरू हुआ है, उसमें भी हमारी प्राचीन और पारंपरिक विद्या को ध्यान में रखा गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी हमने आयुष प्रणाली का व्यापक रूप से उपयोग किया। आयुष काढ़ा, इस नाम से आयुर्वेद आधारित काढ़ा खूब प्रचलित हुआ। आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी फॉर्मुलेशंस की ग्लोबली भी
बहुत डिमांड देखने को मिल रही है। दुनिया के अनेक देश आज पैंडेमिक से बचाव के लिए ट्रेडिशनल हर्बल सिस्टम के उपयोग पर बल दे रहे हैं। साथियों, आयुर्वेद और इंटीग्रेटिव मेडिसिन के क्षेत्र में भारत के जो अनुभव है उनको दुनिया के साथ साझा करना भारत अपना दायित्व समझता है। डायबिटीज, ओबेसिटी, डिप्रेशन जैसी अनेक बीमारियों से लड़ने में भारत की योग परंपरा दुनिया के बहुत काम आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग प्रचलित हो रहा है और दुनिया भर में लोगों को मानसिक तनाव कम करने में, मन, शरीर, चेतना में संतुलन कायम करने में योग मदद कर रहा है। योग के दायरे का विस्तार करने में भी ये नया संस्थान अहम भूमिका निभाए, ये बहुत आवश्यक है। एक्सेलेंसीज, आज इस अवसर पर मैं इस ग्लोबल सेंटर के लिए 5 लक्ष्य भी रखना चाहता हूं। पहला लक्ष्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ट्रेडिशनल विद्याओं के संकलन का है, उनका डेटाबेस बनाने का है। अलग अलग देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन की अलग अलग परंपराएं रही हैं। इस केंद्र में इन परंपराओं का संकलन करते हुए एक वैश्विक संग्रह यानी रिपोजिटरी बनानी चाहिए। ये केंद्र इन परंपराओं के जानकारों, मूल पद्धतियों के स्रोतों का अध्ययन करके भी उनका एक संकलन कर सकते हैं। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है ताकि अलग अलग देशों में मौजूद पारंपरिक चिकित्सा की महत्वपूर्ण जानकारी आने वाली पीढ़ियों को मदद करती है। साथियों, जीसीटीएम को पारंपरिक औषधियों की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी बनाने चाहिए। ये आपकी संस्था का दूसरा लक्ष्य हो सकता है। इससे हर देश में लोगों का भरोसा इन औषधियों पर और बढ़ेगा। हम देखते हैं कि भारत की कई पारंपरिक दवाइयां विदेशियों को भी बहुत प्रभावी लगती है, लेकिन वैश्विक स्टैंडर्ड न होने की वजह से उनका नियमित व्यापार सीमित रहता है। इसलिए उनकी उपलब्धता अभी कम रहती है। मुझे लगता है कि कई दूसरे देशों को भी इसी तरह की मुश्किल आती होगी। इस ग्लोबल सेंटर को इसके समाधान के लिए भी काम करना चाहिए। WHO ने भी हाल में आयुर्वेद, पंचकर्म और यूनानी के लिए बेंचमार्क डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। इसका विस्तार किया जाना भी जरूरी है। साथियों, जीसीटीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां विश्व की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के एक्सपर्ट्स एक साथ आए, एक साथ जुटे, अपने अनुभव साझा करें। इन प्रयासों को ये ग्लोबल सेंटर अपना तीसरा लक्ष्य बना सकता है। क्या ये संस्थान एक सालाना समारोह कर सकता है? कोई एनुअल ट्रेडिशनल मेडिसिन फेस्टिवल कर सकता है जिसमें दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देशों के एक्सपर्ट्स चिंतन करें, अपनी पद्धतियों को साझा करें। साथियों, मैं समझता हूं इस सेंटर का चौथा लक्ष्य रिसर्च में निवेश से जुड़ा होना चाहिए। जीसीटीएम को ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में रिसर्च के लिए
फंडिंग को मोबिलाइज करना चाहिए। हम देखते हैं कि आधुनिक फार्मा कंपनियों के लिए रिसर्च क्षेत्र में अरबों खरबों डॉलर्स उपलब्ध रहते हैं। हमें उसी तरह के रिसोर्सेज ट्रेडिशनल मेडिसिन में रिसर्च के लिए भी तैयार करने चाहिए। पांचवा लक्ष्य ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से जुड़ा है। क्या जीसीटीएम कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विकसित कर सकता है, जिसमें मरीज को मॉडर्न और ट्रेडिशनल मेडिसिन दोनों का फायदा मिले। अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इन प्राचीन विद्यालयों के इफेक्टिव इंटीग्रेशन से अनेक बीमारियों से लड़ने में मदद मिल सकती है। साथियों, हम भारतीय वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामय इस भावना से जीने वाले लोग हैं। पूरी दुनिया एक ही परिवार है और ये पूरा परिवार हमेशा निरोगी रहे, ये हमारा दर्शन रहा है। आज WHO जीसीटीएम की स्थापना से भारत की ये परंपरा और समृद्ध हो रही है। WHO का यह केंद्र विश्व भर में लोगों का स्वास्थ्य बेहतर बनाएगा। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं अब दोनों मेहमानों का समय निकालने के लिए, इस समारोह को ऊंचाई देने के लिए, इसका महात्म्य बढ़ाने के लिए हृदय से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्साहवर्धक और ज्ञानवर्धक संदेश के लिए, जो आपके अपने एक्सपीरियंशियल व्यूज हैं। और ladies and gentlemen, today history has been created. Let's capture this moment in the cameras with all our leaders here on the stage. Once again expressing a big thanks to Honorable Prime Minister Modi for the leadership, thanking Honorable Prime Minister of the Republic of Mauritius for joining us, and thank you to Dr. Tedros. जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज यहाँ पर इस शिलान्यास आने वाले समय में ट्रेडिशनल मेडिसिन के युग का आरंभ है, और 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मनाएगा, तब ये ट्रेडिशनल मेडिसिन पूरी तरह से पूरे विश्व की सेवा में अपनी प्रतिबद्धता की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। Once again, thank you to all present here. Thank you for joining us, and many congratulations to all the leaders of WHO, of Ministry of Ayush and all.